हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द एडवाइस क्यूब। आप सबका स्वागत है चैनल पे। हमारे 17 सितंबर है आज एंड इट्स अ गुड डे, न्यू डे। कल निफ्टी के लेवल्स थे, बैंक निफ्टी के लेवल्स थे जो प्रोवाइड किए गए थे आपको, एंड उन लेवल से काफी हद तक नीचे आई है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। विनय इज राइट नाउ नॉट विद अस गाइस, तो he'll be back with us in some time. He's stuck in some work, so he'll be back with us। थोड़ी सी देर में विनय हमारे साथ वापस आ जाएंगे। हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल चाल है। तो कल 22,700 के 740 का लेवल
हेलो एवरीवन। तो हम बात कर रहे थे आज की मार्केट की रिगार्डिंग। अनीता जी, मैसेज आया आपका, 1 सेकेंड, आई विल टेक। एक बार थोड़ा मार्केट राउंड अप ले लेते हैं। तो येस्टरडे द इंडेक्सेस क्लोज्ड अबव, तो निफ्टी कल 500 सॉरी 610-12 के आसपास बंद हुई थी। एंड वी हैड बैंक निफ्टी आल्सो क्लोजिंग नियर अबाउट द 600 रेंज। तो जो 740 से जो सेल था, एक लेवल था 740 का बैंक निफ्टी का, उसने उस लेवल को टच किया था। 748 का एग्जैक्ट हाई बनाया था, वहां पे सस्टेन नहीं कर पाई थी। एंड इट ओपन टुडे 22,300। सो ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट का एक वो था। 400 700 से 300, 400 पॉइंट डाउन आई थी बैंक निफ्टी इन द मॉर्निंग। इट ओपन लो एंड 340 पे ओपन हुई थी। इट मेड अ लो ऑफ 22,300। तो जो लेवल था एग्जैक्टली वो 22,200 था, एंड देन 22,000 था। तो अभी 22,200 पे तो निफ्टी टच करके नहीं आई है। ऑल्दो अगर किसी ने सेल किया हो तो वो प्रॉफिट जरूर बुक कर सकता है। कल जितेंद्र जी ने सेल किया था लेकिन उन्होंने निकाल दिया था। तो एक बार हम देख लेते हैं कि गैप डाउन हुआ था निफ्टी में, तो उसके बाद क्या हो सकता है। एज यू कैन सी हेयर, दिस वाज द गैप डाउन, एंड गैप डाउन पे आरएसआई नीचे आई थी, स्कॉच नीचे बिल्कुल आ गया था, मैकडी भी कन्वर्ट हो चुका है। सो अभी एक गैप फिल करने की तरफ भाग रही है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी दोनों में आज गैप डाउन थे, ठीक है। तो अभी बैंक निफ्टी गैप फिल हो रहा है। तो अभी करंट व्यू अनीता जी कुछ नहीं है, ओवरऑल व्यू स्टिल नेगेटिव है। बट करंटली जो मेरे को समझ आ रही है चीज, वो ये आ रही है कि एक बार गैप फिल होने देते हैं, उसके बाद क्या परफॉर्मेंस है हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट लेट द गैप फिल एंड देन वी विल सी फॉर द परफॉर्मेंस। गैप जो है वो 552 के आसपास फिल होगा, तो 540 के आसपास। तो लेट्स वेट फॉर द मार्केट्स टू सेटल डाउन अ बिट फर्दर, एंड हाउ इट रिस्पॉन्ड्स टू द गैप इज द अल्टीमेट कंसर्न राइट नाउ। अगर वापस डाउन मूवमेंट आती है तो वील हैव टू वेट एंड सी टू ऐड, लेकिन दिस इज एन इंपॉर्टेंट जंक्चर। अगर गैप फिल हो जाता है तो शायद 740 के ऊपर निकल जाए, एंड 740 के ऊपर अगर सस्टेन ये कर गई, then it's an important thing to see forward, look forward to. So for first, let us wait for it to sustain there. Saban Thomas जी, very good morning. इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं गाइस निफ्टी की, तो वो भी गैप डाउन हुआ था। एंड 514 ऑन स्टॉक एनालिसिस, आई थिंक यू बुक प्रॉफिट इन बैंक निफ्टी, क्योंकि आपने कल 602 पे एक सेल किया था एंड 575 पे एक, तो आपकी 80-85 की एवरेज थी। तो एक लॉट में आपने प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो आई सजेस्ट यू टू वेट फॉर वन मोर लॉट। एक और लॉट में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर ऊपर जाते हैं तो निकालने के लिए सोचेगा। एफएसएल ने आज 73 वापस लगा दिया है। एनटीपीसी 88, एनटीपीसी थोड़ा और डाउन गया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एनटीपीसी स्टिल अ होल्ड, क्यूपिड इज अ होल्ड। आई प्रॉफिट बुकिंग हुई है ज्योति लैब्स में। सो ज्योति लैब्स कल 158 का हाई लगाया था। सो करंटली इट्स ट्रेडिंग एट 150 अराउंड लेवल्स। एनसीसी इज ओके, इन्फोसिस इज राइजिंग अ लॉट। HDFC बैंक 1090 चला गया, सो इट हैज नॉट येट अराइव टू द लेवल्स दैट वी हैव सजेस्टेड इट, कि 1040 के आसपास, 1027 के आसपास। अजंता फार्मा इज स्टिल देयर, वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। 1607 का टारगेट है हमारा इस पे। 1450 की बाइंग है। टाटा केमिकल्स आज फिर डाउन आ गया है। पॉलीमेडिक्योर एंड यस रेडिको खेतान गाइस, कल हम देख रहे थे, कल रेडिको खेतान भी डिड नॉट सी मच। तो कल रेडिको खेतान जो था उसने 470 के नियर अबाउट का हाई लगाया था। एंड रेडिको खेतान एक बार देख लेते हैं क्या उसने ब्रेकआउट दिया है, और इट्स स्टिल ट्रेडिंग इन द रेंज। रेडिको खेतान ने कल अच्छी मूवमेंट दी थी आफ्टर द मार्केट, आई वाज वाचिंग एंड गोइंग थ्रू इट। ओके, सो आज गैप डाउन हुआ है रेडिको खेतान में। yesterday it closed around 470 levels. So today we have a gap down in Redico Khaitan. Okay, so here it is. बहुत strong breakout दिया है इसने. Okay, so you can hold on to it. वीकली चार्ट पे देख लेते हैं। ये जो रेड जोन था जहां से इसने पहले मूवमेंट दी थी, इट हैज ब्रोकन अबव द रेड जोन, यू कैन ऑल कैन क्लियरली सी। तो जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया था वो अभी होल्ड कर लीजिए, जिनके पास पार्शियली प्रॉफिट बुक था दोज कैन होल्ड। अदरवाइज द नेक्स्ट एरिया इज दिस।
दिस इज द नेक्स्ट एरिया फॉर रेडिको खेतान। तो प्रॉफिट्स बुक करने के लिए 480 के आसपास आई थिंक इट्स अ रेंज। 480 नेक्स्ट वीक के टच भी कर सकता है। तो 480 इज द रेट नियर बाय विच यू शुड बुक प्रॉफिट इन रेडिको खेतान। अगर किसी ने पार्शियल प्रॉफिट नहीं बुक किया है उनके लिए, जिन्होंने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया है दे कैन होल्ड ऑन टू इट, नो इश्यूज अबाउट दैट। लेकिन प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिए। वापस अगर इस जोन में आता है 440 लेवल्स, 415 लेवल्स, तो वापस एंट्री मिल जाएगी। लेकिन 480 के आसपास डू लुक आउट फॉर बुकिंग प्रॉफिट्स। ओके, सो दिस इज द व्यू फॉर रेडिको खेतान। एंड क्योंकि इस वाले जोन से तो इसने ब्रेकआउट दे दिया अच्छा खासा, तो नेक्स्ट जोन वी विल हैव टू लुक आउट फॉर द नेक्स्ट जोन। तो आई होप अनीता जी बैंक निफ्टी का व्यू क्लियर है आपको। रेडिको खेतान हमने डिस्कस कर लिया है, काफी अच्छी मूवमेंट दे चुके हैं। ऑलमोस्ट 380 अभी एक हफ्ते पहले था जब मार्केट में करेक्शन आई थी, एंड नाउ यू कैन सी इट्स गोइंग अराउंड 480। सो 100 पॉइंट की मूवमेंट ये ऑलरेडी हमें दे चुका है रेडिको खेतान। हिंदुस्तान फूड से प्रॉफिट बुक कर लिया गया है, इट्स राइजिंग अ लॉट, 990 का हाई लगा दिया है आज। एसबीआई जो है वो न्यूज में है। एसबीआई की एक न्यूज में आप लोग के साथ शेयर करना चाहूंगा। एसबीआई का एक प्लेटफॉर्म है, आप लोगों ने सुना होगा, योनो, वाई ओ एन ओ, ये इनका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो नेट बैंकिंग एंड वेरियस अदर सर्विसेज जो एसबीआई की वो कनेक्ट करता है। तो जो योनो प्लेटफॉर्म है इट हैज बीन वैल्यूड सेपरेटली एट अराउंड 400, नहीं सॉरी, $40 billion। Where is it? The article I was reading. Yeah, I think this is the article I was reading. I'll read it out to you. तो 40 बिलियंस के नियर अबाउट जो एसबीआई का योनो प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट एक प्लेटफॉर्म है एसबीआई का, जो उनका इंटरनेट बैंकिंग एंड वेरियस ऑनलाइन सर्विसेज है। तो मैं आई रीड आउट द टेक्स्ट फॉर यू गाइस। इट्स लाइक द कंट्रीज लार्जेस्ट लेंडर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, could be sitting on a gold mine when it comes to its digital startup Yono. Yono की full form है You Only Need One. The super app could be valued at $40 billion, with the lender considering long-term plans to hive it off as separate entity once it assumes a certain size. So दिस इज अ गुड न्यूज फॉर एसबीआई, जो इतना ऑलरेडी इंडिया का लार्जेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया था, गोल्ड डिजिटल स्टार्टअप था उनका एक, योनो, एंड इट्स डूइंग अ लॉट फॉर देम, एंड इट्स इसकी वैल्यू बहुत अच्छी लगी है। पीपल आर यूजिंग इट कंटिन्यूअसली। तो एसबीआई इज अ लुकआउट। लॉन्ग टर्म बाय एसबीआई पे हमारा है 180 लेवल से, तो यू कैन होल्ड ऑन टू एसबीआई फॉर फर्दर लॉन्ग टर्म्स, एंड यू कैन एक्सपेक्ट गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम इट। तो दिस इज द व्यू फॉर एसबीआई, जो एक टेक्निकल और फंडामेंटल न्यूज जो एसबीआई से रिलेटेड है। दिस हैज नॉट बीन, ये जो योनो है इसको मार्केट कंसिडर नहीं कर रही है फिलहाल, एंड वंस मार्केट स्टार्ट कंसिडरिंग द योनो प्लेटफॉर्म ऑफ एसबीआई, then you might see a good jump in the share prices of SBI. So this was the view for SBI। long term buy obviously है, ये 180 लेवल से हम सजेस्ट कर रहे हैं, और हमारे जो मेन वीडियो है चैनल की उसमें भी एसबीआई का नाम हमने लिया था। तो इसके अलावा एक जो शेयर जो है न्यूज में है, स्पाइस जेट एंड इंडिगो, they have sought interest-free credit for at least $1.5 billion from the government to enable them to cope with the loss of revenue from the COVID-19 pandemic. So the aviation sector जो है, it's looking for some revenues, it's looking from some help from the government. तो उस help के लिए ये लोग अपना गवर्नमेंट से पैसा मांगा है, इन्होंने इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट मांगा है कि जिसपे इनको इंटरेस्ट ना देना पड़े, एंड इट्स अराउंड $1.5 billion। एक न्यूज आई है गाइस टाटा प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग, अगर आपने सबने सुनी हो कल, तो जो टाटा प्रोजेक्ट्स है, जो हमारी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनने जा रही है, तो टाटा प्रोजेक्ट्स हैज बैक द राइट्स फॉर इट। लैंडिंग इसका जो टेंडर लगा था, टेंडर में बिड करके दे बैक द राइट्स फॉर द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, टाटा प्रोजेक्ट्स वर्थ 861 करोड़ रुपीस। तो दैट विल एड टू द गुडविल फैक्टर ऑफ इट, एंड गुड। तो एसबीआई के बारे में हमने अभी डिस्कस किया है कि उसका योनो प्लेटफॉर्म जो है, डू लुक आउट फॉर इट, कि उसका योनो प्लेटफॉर्म इट्स डूइंग रियली गुड, एंड इट्स वैल्यूड एट $40 billion।
उसका सेपरेट एंटिटी की तरह कंसिडर किया जा रहा है, तो एसबीआई में उसको जोड़ा ही जा रहा, बट इट शोज यू द पावर ऑफ एसबीआई, व्हाट इट कैन डू एंड व्हाट बेस इट हैज। तो जब वो डिजिटल स्टार्टअप शुरू किया उन्होंने, तो दिल बी अर्निंग गुड अमाउंट फ्रॉम इट। ओके, मेरिको से रिगार्डिंग न्यूज है। मेरिको शेयर जो आपने सुना होगा, इट हैज एक्सटेंडेड इट्स एडिबल ऑयल ब्रांड सफोला। जो सफोला का हम लोग ऑयल लेते यूज करते हैं, तो वो मेरिको कंपनी का है। एंड इट हैज एक्सटेंडेड इट्स एडिबल ऑयल। सफोला को उन्होंने आयुर्वेदा में भी थोड़ा एक्सटेंड किया है, इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स यूज करके, जैसे कि काढ़ा एंड milk mix to cash on the increased awareness and interest in such products. तो Marico is doing good, मतलब मैनेजमेंट सोच रही है। तो what does these commentary tell us? These commentary tell us कि exactly मैनेजमेंट क्या सोच रही है, मैनेजमेंट किस हिसाब से काम कर रही है। तो इसकी मैनेजमेंट समझदार है। दे नो पीपल आर गोइंग इनटू आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स, दे नो पतंजलि आजकल कितना ज्यादा हाईलाइट में है, तो दे वर्किंग टुवर्ड्स इट। एंड तो उन्होंने अपना जो सफोला ब्रांड है, उसको इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोडक्ट्स में भी लॉन्च कर दिया है। माइंड ट्री में एक थोड़ा अच्छा न्यूज नहीं आया है। माइंड ट्री का को फाउंडर जो थे, कृष्णा कृष्णा नटराजन, ही हैज सोल्ड आउट हिज शेयर्स, 42 लाख शेयर्स, और हिज 2.55% शेयर इन द कंपनी, अप्रोक्सीमेटली 530 करोड़ रुपए में उन्होंने सेल आउट किया है। उनके रिलेटिव्स ने भी साथ में सेल आउट किया है। Okay, hi Seven Thomas. So you are asking about Excel Industries. So today I've opened a Morningstar also. Morningstar is a one website that we use a lot of times. इससे हमें फंडामेंटल्स थोड़े अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो we'll check out for Excel Industries. Vinay is connecting with us, so I'll take some time. 2 minutes. Give me 2 minutes.
Sabin Thomas, just wait for one more minute. I'll be looking back at to you. We're just trying to connect Vinay with us. Okay, guys, so Vinay is with us. Good morning, Vinay. Good morning, Umesh. Good morning, everyone. Yeah, so we have a question from Sabin Thomas, but before that, I would like to discuss the market conditions, the world market, and what's your view? Yesterday, the Fed policy came out and they didn't increase the interest rate, even though they showed a pathway that probably by 2023 there's a no, the less chances they're gonna increase the rates. So, which is shows like a negative impact on the US market. I was expecting a big gap down, but it happened, but it didn't like hold for a while. It came back. So I was expecting the market will correct today about at least the Sensex should go down 700 points. But let's see when Europe will open today, what gonna happen. But it was really negative last night the US market, and the futures were about 1.5% down. इसके अलावा विनय हम बात कर लेते हमने इंडिविजुअल स्टॉक्स की अपनी बात कर लेती है ना कर चुके हैं हम लोग नाउ लुक एट द एक्सेल इंडस्ट्रीज वी Uh, हैव द मॉर्निंग स्टार आल्सो एंड लेट्स जस्ट Excel डिस्कस दोस. Industries, I have already in separately in my watch list, but there was a I mentioned this share like a 2 weeks back also. Okay, There yeah. was a breakout zone between 880 to 890. So it happened probably yesterday, or yeah, it happened kind of today also. Like it 8994 was the opening. So it's a nice breakout. Fundamentally, the share is really good. I know the fundamentals. Yeah. So the targets again, can see the Sabin Thomas what he's looking for. The target idea is good. My first target is around 1100. So I've opened morning star Vinay. Let's just go through it once so that people will get an idea कि हम किस हिसाब से फंडामेंटल्स किसकी बात कर रहे होते हैं कहाँ बुक वैल्यू होती है एंड so guys this is the Morningstar app and these are the fundamental things that I've opened. तो अगर हम देखेंगे रेवेन्यू सबसे पहले देखते हैं इनका रेवेन्यू आ रहा है आप देखेंगे 2011 से
2015 पे भी रेवेन्यू, 16 पे भी, 4 4 5 पे आया, 8 पे आया, 6 पे। सो रेवेन्यू इज गोइंग गुड। पिछले 10 साल में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू है। एवरी ईयर द रेवेन्यू इज ग्रोइंग गुड इन अ गुड परसेंटेज। उसके बाद अगर ऑपरेटिंग इनकम की बात करें, इट इज ऑल्सो गोइंग गुड। 2017 में थोड़ा डाउन आया था, लैग आया था, बट ओवरऑल इट्स गुड। नेट इनकम इट्स 2011 पे 140 करोड़ के मिलियन थी, 140 मिलियन के आसपास थी। नाउ इट इज अराउंड, इट मेड अ हाई ऑफ 1500 मिलियंस इन 2019। अभी थोड़ा लैग आएगा, ऑब्वियसली पूरी इकोनॉमी में लैग है, इसमें भी आएगा। EPS has risen from 14 to the 122 was the high EPS level. Dividends, yeah, they give dividend, continuous dividends मैंने 2 रुपए से लेके 28 रुपए तक के डिविडेंड ये लोग दे रहे हैं। एंड बुक वैल्यू इज अराउंड 573, एंड द करंट प्राइस विनय, It's 922. या, सो बुक वैल्यू से थोड़ा महंगा तो है, ऑब्वियसली इट्स अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट द अर्निंग्स आर सपोर्टिंग दिस थिंग। दे हैव अ फ्री कैश फ्लो मेंटेनिंग विद देम। बीच में थोड़ा फ्री कैश फ्लो कम हुआ था, लेकिन दे हैव द फ्री कैश फ्लो ऑफ 400 मिलियंस नियर अबाउट। Let's look at some financial health of this. Okay, so the current ratio is good. It's 1.89, 2.80 भी रह चुका है, so they have good assets in them. Uh, Debt to equity ratio, they have almost zero debt to equity ratio. Current ratio is also good, around two levels. So yeah, as when I was saying, the fundamentals looks really good, and cash flows are increasing. Growth, let's look at the growth ones. EPS 3-year average is around 1580. Okay, 3-year average of this. Okay. So yeah, the book value से तो ये बिल्कुल महंगा है, लेकिन the financials are supporting it, Vinay, as you said. So you have done the its analysis earlier also, but we just discussed it so that everyone can look towards it. And so, Sabin Thomas, you're listening to us, I hope, and I think this is a good share. Vinay thinks this is a good share. You can hold on to it. Fundamentally, you can add on to it according to your portfolio size, according to your position size, and this is good, Vinay. Yeah. Yes, the really good one. Vinay, if you can mention Sabin Thomas in the comment section, I hope he was listening to us. Sabin Thomas, if you're listening to us, please say yes. And we received the feedback from Siddhant Das Gupta in the morning. Siddhant Das Gupta, thank you so much for your feedback. He has said that he come here often, and he likes the platform, Okay, good quality okay. content. So thank you He so was much. Guys, you he can was show us support through the super chat options. Available है आपके नीचे ही super chat का option. You can show us support from that also. It's a new feature added by YouTube. We'll discuss shares further and the market conditions further. so yes, we can discuss like When a what's the Redico Khaitan I was discussing with people, and it made a high of around 570 yesterday. It closed at around 569. Today it has opened a bit gap down, but 580 is the target that I saw, short term target. जिन्होंने अभी partial profit book ना किया हो, it did a breakout. yeah, it's a I think it's the partial profit area. 580. 580, yeah, 580, 590 is the partial profit area. Okay. So guys, all those who are holding on to the Redico Khaitan, please look out for 580 targets and book partial profit. लॉन्ग टर्म शेयर है, तो ऐसा नहीं है सारी पोजीशन से निकल जाओगे, कुछ पोजीशन जरूर रखिएगा, एंड लुक आउट फॉर फर्दर न्यू टारगेट्स, अबव टारगेट्स। होल्ड है ये, 2-3 साल के लिए होल्ड करेंगे, इट विल गिव यू गुड रिटर्न्स। And another reason why, because if in November market corrects, then you will get this much cheaper and you already book some profit.
So yesterday the bank nifty levels really hold Umesh the level which we mention over here. सो हमने 22,740 का लेवल दिया था कि अराउंड दिस इज द लेवल. सो हाई शायद 748 का गया था. And we can see that was the key level. And same with nifty, we can also say कि 616 620 तक गया था. सो टुडे द ट्रेड अगेन विल बी लाइक कल का जो हाई था आप उसका उस पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकते हैं. दैट विल बी द ट्रेड फॉर टुडे इन निफ्टी. बैंक निफ्टी अगेन 740 वही लेवल होगा कि उसी के आसपास सेल होगा तो ठीक है. उमेश कल जो ओनेस्ट स्टॉक एनालिसिस थे उन्होंने सेल किया था 2 लोट शायद. उनको एक में एक में पार्शियल प्रॉफिट या he तक. gave a message in the morning and he said that he's looking for उसने 2 lot sell किए थे तो what should he do? So I advised him to book partial profit at the 554 levels near about, and one lot he's holding on to it. गुड. Associate alcohol is showing some movement, is around 1% up today. We added in our portfolio at 254 levels. It's around 260 now. Most of the shares are correcting. HDFC Bank is coming back again. I think the HDFC Bank took a support at 1054. FSL is back up again. It's coming to the 74 level again. Excel Industries. तो विनय गैप डाउन था, अभी गैप फिल ऑलमोस्ट पूरा तो नहीं हुआ लेकिन काफी हद तक गैप फिल हुआ है. नाउ विल हैव टू वेट एंड सी. स्कॉच जो है वो पॉजिटिव की साइड है, बाकी सब नेगेटिव है. तो हमें दिख सकता है गैप, अब यहाँ पे गैप फिल हो, यहाँ पे मूवमेंट एक दिखने को मिल सकती है. मेरे हिसाब से अगर यूरोप नेगेटिव हुआ तो वापस जिस पॉइंट पे मार्केट खुला था वहीं पे जाके टिक जाएगा. हाँ, सेम व्यू विनय. मेजर फैक्टर वाज द फेड पॉलिसी गाइस. तो आज जो बैंक में निफ्टी में डाउन गैप डाउन हुआ है, दैट वाज ड्यू टू फेड पॉलिसी. एज विनय एक्सप्लेन्ड द फेड पॉलिसी, जो And उन्होंने इंटरेस्ट today, रेट के बारे में बात की. today, Umesh, Bank of England have the policy today. So they're gonna come out. What kind of stimulus they're gonna provide to the economy? एट व्हाट टाइम विनय? I think it's gonna be same around Indian time 6:30 in the evening. Guys, if you have any question, any query, you can put it here. We've discussed Excel Industries. We've discussed Redico Ketan. कोई और शेयर है? कल जब हम सेशन लॉग आउट कर रहे थे तो देयर वाज वन क्वेश्चन अबाउट कोल इंडिया विनय. इट वाज फ्रॉम आई फॉरगॉट द नेम, but he asked about Coal India, and Coal India is at its all-time low when 125 पे अभी ट्रेड कर रहा है. So any view on Coal India? Initially, Umesh, if you remember when we start this channel, we gave Coal India as a long-term share, but later on, when I didn't see any movement, we exit the position around 132.
So I don't think so. We have much better stocks rather than Coal India. Even though you can invest for 10-15% invest because there's support level around 117. If somebody want to buy a Coal India, buy at the support of 117. 117 is the support level for Coal India. We have a message from Anita ji. Views. She's asking a view. She has short. She has taken a position. मैम वेट कीजिए, अभी तो आज इतनी जल्दी तो नहीं आएगा। अगर अगर आज यूरोप नेगेटिव खुलता है तो क्या पता आपका ये हो जाए, जो सी का जो आपने लेवल लिया हुआ है। पर अभी तो हमारा व्यू नेगेटिव है, पर लेवल थोड़ा सा ऊपर है। आपने बहुत जल्दी शॉर्ट कर रखा है। कल अनीता जी आपने 700 लेवल पे शॉर्ट नहीं किया। आई एक्सपेक्टेड कि आप शॉर्ट करेंगे वहां पे। अगर किया होता तो आज सुबह मॉर्निंग में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। तो ये फायदा होता है लेवल के पास करने का काम। करंटली वी वेटिंग फॉर यूरोप। एक सवा घंटे में यूरोप खुलेगा। गैप अप गैप डाउन हुआ था जो गैप फिल हो चुका है। इफ यूरोप ओपन्स नेगेटिव वी माइट अगेन सी द लोअर लेवल्स टचिंग। Whenever we discussed about योनो एंड द एसबीआई, सो आई वाज रीडिंग इन द मॉर्निंग कि जो एसबीआई है उसने एक प्लेटफॉर्म जो अपना उनका योनो लॉन्च किया हुआ है, डिजिटल स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है। इट्स बीन वैल्यूड एट अराउंड 40 बिलियंस। 40 billion। Yeah, and it has not been realized yet by SBI. I was reading it's a gold mine for them, and they are taking it as a separate entity currently. It's a platform, digital platform, and it connects all the digital services of SBI, and they have a wide range of services. So I think so it gonna give an impact on SBI. So once like people can add SBI around 190, 184 where we mention, and it's trading in near about in that zone only. सेकंड में आज एक आईपीओ लॉन्च होना था। Highest Mind IPO has been launched. So what was the status? Does he give the profit or? So Happiest Mind, when it had the range of 165 near about. It was subscribed 151 times and it opened 350, made a high of 394. Happiest Mind. So what the current price is trading at It's the moment? 377. 377. So it was the because the IPO price the launch is around 345 to 350, right? So it doesn't make a because the way the public has subscribed this one, I thought it was the one of the largest IPO that subscribed in the last 10 years. Okay. So in the last 10 years, it was the one of the biggest IPO that people have subscribed. Like you can see that how many times they have subscribed. I thought they're gonna give like it will go like Interglobe Aviation, like Indigo, because when Interglobe Aviation or DMart they open like 100% up. Yeah. And there's another IPO is coming soon, Umesh. Can you check the date? Route Mobile. Route Mobile. Yeah.
the listing date is around 21 September for Route Mobile. It could be 21st of September. What is the price they're allotting? It's a 600 crore IPO, and the price band is, let me check the price band. I थिंक हैप्पीएस्ट माइंड का जो प्राइस बैंड था वो 165 था, एंड राउट मोबाइल का 345 है. Okay. It's 345 to 350 per equity share, and the happiest Yeah. mind was 165 to 170. So the happiest mind gave a return about 125%. Yeah, it gave a return about 125%. Because And I was confusing between the like the price band. I thought like why this is the one of the highest subscribe in the last ticket. yeah, guys, इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन, you can put it here. You've got questions, we give you answers. And do check out the super chat feature, guys. आपके chat option में नीचे एक बना हुआ है डॉलर साइन है. Do check out the feature if you're interested in it. You can provide us feedback through it, and you can put in any question about any share that you'd like to discuss. So we have discussed few shares from the last 2 3 days, and we've mentioned it here and under the column of new share discussed. Out of these, the Philip Carbon share is the one we like. NTPC we have already added in our portfolios. The rest of it was not that good. Associated alcohol, yes, we have added it also in our portfolios at lower levels. So all of this is the new addition in the portfolios. One more thing, ITC we're talking about. So ITC is falling down from the 180s level, and the next level to add your position. अगर किसी ने ITC में already position add की है, कोई डरने की बात नहीं है. As we usually say, जो भी आप एक stock लेते हैं, you should be आपके अंदर इतना स्टैमिना होना चाहिए कि एटलीस्ट वो 50% डाउन हो जाए तब भी आप उसके साथ खड़े हैं, बिकॉज यू स्ट्रांगली बिलीव इन द कंपनी, नॉट इन द शेयर्स. So it is just the emotional value जो हमें शेयर की वैल्यू दिखती है, but the true value is represented by the company. So ITC we are already positive about it. जो next इसका level होगा, I've mentioned it here in the morning session जो हमारा होता है, ITC 167 के आसपास you can look forward to add the positions. So उससे पहले अभी कोई position ITC में add नहीं की जाए. फिलहाल के लिए 180 से इसका ऐड था. वी विल बी एडिंग पोजीशन एट अराउंड 165 to 166. So look out for ITC at these levels. Look out for HDFC Bank at lower levels. HDFC Bank का एक बार चार्ट देख लेते हैं किस हिसाब से, क्योंकि it's थोड़ा सा बड़ा है HDFC Bank डेफिनेटली लोअर जाने से पहले. So we have a down movement in Nifty back. It's now at around, बिना निफ्टी में डाउन मूवमेंट आई है गैप फिल करने के बाद. इट्स एट अराउंड 11,552 नाउ, थोड़ा सा 70 के आसपास गई थी. एंड बैंक निफ्टी भी वही है. ठीक है, अभी यूरोपियन मार्केट विल डिसाइड द थिंग्स फॉर इट. ओके, सो यू कैन सी HDFC बैंक नाउ. तो 15 मिनट आज इसमें भी गैप डाउन हुआ था, गैप फिल किया है इसने भी अपना पूरा. अब गैप फिल करके नाउ इट इज टेकिंग सम रेजिस्टेंस फ्रॉम दीज लेवल्स. विल सी जस्ट आवरली चार्ट एंड सी व्हाट इट्स गिविंग अस. So it came down till 1070 in the morning. Yesterday आप देखेंगे 1050 पे हमने जो ड्रॉ कर रखा था फिगर गाइस, दिस वाज द लेवल दैट वाज ड्रॉन.
although it was not, it was just for the aggressive investors. We talked about both the guys, investors, aggressive and the defensive investors. So this was the level जहां से उठा था ये, and you can see 1050 से उठ के वापस यहाँ चला गया है, एंड वी आर वेटिंग फॉर दीज डाउन जोन्स। जो नीचे वाला बाइंग जोन है, नीचे वाला डिमांड जोन है, हम इन लेवल्स का वेट कर रहे हैं। यहाँ से ऑलरेडी एक बार मूवमेंट ले चुका है अप वाले जोन से, एंड लेट्स वेट फर्दर। यहाँ पे 200 पीरियड मूविंग एवरेज भी है जहां से इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। लेट्स लुक आउट फॉर द इंडिकेटर्स एज वेल। व्हाट डू द इंडिकेटर्स से अबाउट एचडीएफसी बैंक? ओके, Vinay, what do you see technically in the HDFC Bank right now? Technically, the lower levels we mentioned is good, but as I said earlier, like 1054, 57, he took a support over there. So next time when he's there, we need to see like there's a probably, and we need to see the Nifty movement at the same time also, because yesterday it moved with the Nifty, because when the Nifty went up, it just flew with that Nifty, even though Bank Nifty was not supporting that much. But today Bank Nifty is correcting. Amish is now for 22,460. Let's see how much down movement it can show. Is now is 1,089. Do you see any intraday trade in HDFC Bank if someone can do it with a stop loss? They can sell. They can sell with the same level which we have mentioned earlier, 1119 का एक जो लेवल है उसके स्टॉप लॉस के साथ सेल कर सकते हैं.
whenever we have a news in a धनुका एग्रीटेक, धनुका एग्रीटेक इज अ शेयर, इसमें कंपनी ने अप्रूव किया है जो प्रपोजल फॉर अ बायबैक ऑफ अराउंड 100 करोड़ वैल्यू ऑफ शेयर्स, मतलब दे आर गोइंग फॉर अ बायबैक इन शेयर्स वर्थ अप टू 100 crores, and they have fixed September 28 as record for determining the entitlement of equity shareholders. So buybacks के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है, जैसे guys if anyone is listening to us, so buybacks is when a company showing the company अपने ही shares खरीदती है because they have belief in their company, because they feel that the shares are uh, at right prices to be bought. बट बायबैक्स में भी एक कंडीशन होती है, अगर बायबैक हायर लेवल्स पे होते हैं दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू डू, बट अगर बायबैक्स तब हो रहे होते हैं जब शेयर गिर रहा होता है कंपनी का, इट इज अ वेरी गुड थिंग. सो दिस कंपनी इज गोइंग फॉर अ बायबैक. इसके शेयर कुछ ज्यादा इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, इतना गिरा भी नहीं हुआ है, सो एवरेज है. सो दिस इज अ गुड साइन फॉर दिस धनुका एग्रीटेक. एंड एचसीएल टेक्नोलॉजीज में भी एक न्यूज है, जो एचसीएल टेक्नोलॉजी है और गूगल क्लाउड है. Google Cloud, I think you've all heard of it. So the company and the Google Cloud have expanded their partnership. They have expanded their partnership to deliver accelerated business intelligence platform. So HCL Tech is basically investing in business, they're investing in technology, and they have joined hands with Google Cloud to develop further technologies and do more good to it. So the management is doing good. एंड डॉक्टर रेड्डी का भी विनय आपने सुना होगा, उनको रशिया से कॉन्ट्रैक्ट मिला है डॉक्टर रेड्डी को फॉर द फेज 3 ट्रायल्स ऑफ द कोविड वैक्सीन. Yes, so my son, there's another news like EIH होटल का कोई राइट्स इशू होने वाला है क्या? एक चेक करना था. या विनय, वी डिस्कस दिस थिंग. एआईएच होटल ने राइट्स इशू के लिए अपना बात किया था. उसके बाद मुझे उसमें कोई न्यूज आई नहीं है, लेकिन दिस वाज वन न्यूज that came up after their 1 weeks earlier. So I haven't heard anything after that, but yes, I did hear about the rights issue thing. So need to know like what price they are going to issue those rights. क्योंकि जो ये राइट्स थे करीबन 350 करोड़ के थे. Okay, Umesh, the meeting is today. Okay, the rights issue meeting, EIH Hotel. Yes. So those who are holding EIH, they probably gonna have a discounted rate shares. But it's also a sign like how much down, because it's right issue is like another way to have a cash injection uh, in the company. Like they are again gathering money via the company, like the public. So Vinay, can you tell Because us about rights issue? मतलब rights issue के लिए कैसे प्रोसीड करना पड़ता है? क्या डिफरेंट एप्लीकेशन होती है या शेयर्स के थ्रू होता है? किस हिसाब से होता है? राइट इशू तब होता है एक्चुअली जब कंपनी रिक्वायर्ड सम अमाउंट टू रन द बिजनेस or to take a new project, and they tried to go through banks, but bank don't lend money to the company basically, and they prefer to rather than there's another way of going through that. Rather than going to the banks, they prefer to borrow from the public. So it's not a borrowing, but it's like a kind of reissuing that, relaunching that share again, and the share is kind of showing the growth. So public, that's the another reason why the share is was going up. They were looking forward some investment via some investors and all, but they probably didn't get, so they're going for the right issue.
So is there any And different application for that? no, not application, like it's just they at the moment the everyone know that hotel industry is not doing well, and due to the COVID, the most last 4, 5, 6 months they're just struggling. They need money, and at the moment it shows growth. Public have some confidence in the share. They're gonna launch how many rights they're gonna sell. Now it's up to the person who's holding EIH hotel. So they need to decide ratio how much of shares they're gonna give to that like suppose you are holding 10 EIH hotel shares, but they give a ratio that जो लोग 10 शेयर पे एक शेयर देंगे राइट इशू में, तो आपको 10 शेयर मिलेंगे राइट इशू में, आपको सस्ते प्राइस में 10 शेयर मिल जाएंगे। अभी 85 चल रहा है, तो आपको कह देंगे आप पैसा डालिए और हम आपको शेयर 60 रुपए में दे देंगे सपोज करो। तो यू विल इन्वेस्ट डेफिनेटली, क्योंकि आपको पता है कि 10 शेयर आपको 60 रुपए में मिलेंगे। अभी 86 87 चल रहा है, मैं कल भी उठा के बेचूंगा तब भी मेरे को 20 रुपए प्रॉफिट आ रहा है। सो ऐसा बट जैसे रिलायंस में हुआ था कि रिलायंस का शेयर उस वक्त 1700 1800 के आसपास था, एंड दे इशूड राइट एट अराउंड 1500 रुपीज पे उन्होंने राइट्स इशू किए थे। तो वही होता है, पर ऑन द अदर हैंड जब एक वो प्राइस आता है तो बहुत सारे लोग उन राइट्स को लेते हैं, देन दे कन्वर्ट इनटू प्रॉफिट, देन शेयर गेट डाइल्यूट आल्सो। So I need to, like, we need to see that what price they're gonna offer the right issue. It's an important Okay. factor. Yeah. So I'll just come back and you just continue. So guys, we have discussed about the rights issue that might be happening in the AIH hotel. आज मीटिंग है उनके बोर्ड की, एंड द बोर्ड अप्रूव्स इट, सो विल नो राइट्स इशू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, अगर हो रहे हैं तो किस रेट पे हो रहे हैं। सो विल कीप यू इन्फॉर्म्ड अबाउट द मीटिंग्स एंड द रिजल्ट ऑफ द मीटिंग। मीनवाइल अगर आप भी AIH होटल को होल्ड कर रहे हैं तो डू लुक आउट फॉर द मीटिंग। एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अगर आपको लेने हैं राइट्स तो ले सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है किस रेट पे वो राइट्स इशू हो रहे हैं। विल हैव टू वेट एंड सी फॉर दैट टू हैपन। मीनवाइल जो गैप फिल किया था निफ्टी ने, उसके बाद निफ्टी हैज कम डाउन। ये रेड कैंडल आवरली पे आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज द रेड कैंडल इन द आवरली, एंड करंट रेट पे अपर लेवल्स जो है वो टच हुए हैं। On a stock analysis, you're holding on to it, please hold on to one lot, and you might see the lower levels testing again, and at least to this level downside जो gap था उससे पहले तक। So one lot is good for good profit. You've earned 40 points profit in one lot. इसके अलावा guys, anyone has any question, any query, you can post it here. Right now we're live and we'll be more than happy to answer any question.
ऑनेस्ट स्टॉक एनालिसिस आपका मैसेज आया, शुड आई बुक प्रॉफिट इन, ओके आपने एक लॉट में प्रॉफिट 555 के आसपास बुक किया था, एंड आई थिंक अभी निफ्टी वापस 507 जो आज लो था वो तो ब्रेक कर दिया है, तो अब अभी आपको एक लॉट में अराउंड 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो रहा है। इफ यू वांट टू टेक दिस प्रॉफिट, इट्स अराउंड 7500, क्योंकि 75 का एक लॉट होता है निफ्टी का, एक आपको ऑलरेडी हो चुका है, सो यू कैन लुक आउट फॉर प्रॉफिट्स अगर आप चाहते हैं तो इट्स इनफ फॉर यू। और इफ यू वांट टू वेट फॉर द यूरोपियन मार्केट्स टू ओपन, देन यू कैन वेट, बट इफ यू आर सेटिस्फाइड विद योर प्रॉफिट, यू कैन टेक इट। यू आर अर्निंग अराउंड 7500 और आपने एक लॉट में और भी अर्न किया था अराउंड 152,000, तो 9,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो ब्रदर, इफ यू वांट टू टेक आउट प्रॉफिट्स, यू कैन टेक इट आउट। इफ यू वांट टू होल्ड एंड वेट फॉर द यूरोपियन मार्केट्स टू ओपन, दैट इज योर चॉइस। इसके अलावा guys, if anyone is having any question, any query, you can put it in the comment section. एंड अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों डाउन आई है, क्योंकि हमने बताया था सुबह मॉर्निंग में ही कि प्रॉफिट जो अमेरिकन मार्केट्स थी वो ओके, सो इट्स मेड अ न्यू हाई 11,490। बहुत तेजी से फॉल आ रहा है। अनीता जी, आई होप आपको भी प्रॉफिट आ रहा होगा इस वक्त, एंड यू कैन लुक आउट फॉर प्रॉफिट्स इफ एनीवन wants to. लेट्स सी हाउ हैप्पीएस्ट माइंड अफेक्टेड बाय दिस। आज आईपीओ खुला था, पहले ही दिन मार्केट नेगेटिव जा रही है, so let's see if it is able to go down, then its price, opening price. meanwhile एफएसएल तो वहीं स्टैटिक है, एफएसएल में कोई मूवमेंट नहीं आ रही है मार्केट के गिरने से। ये छोटे थोड़ा सा डाउन जरूर आया है। तो ऑन स्टॉक एनालिसिस यू कैन लुक फॉर अर्निंग गुड प्रॉफिट्स है। 490 के आसपास का लेवल आ चुका है। So we have a message from Honest Stock Analysis. He has booked his profit at around 11,490. So around 10,000 का आपको profit हुआ होगा. It's so good to hear. Now just wait on. अब over trade नहीं करना है आपको. These are the basics to आप अब तक समझ गए होंगे. Now wait further and let's see where it takes us. So 410 का next level है, important level निफ्टी के लिए. लेट्स सी हाउ इट होल्ड ऑन टू इट, वहां पे एक बाइंग पोजीशन बनेगी और शायद बैंक निफ्टी भी तब तक 22,000 पे आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी भी हमें डाउन साइड और लग रही है, ऐसा नहीं हमें अपसाइड लग रही है।
अब यूरोपियन मार्केट्स खुलेंगे, अगर वो भी नेगेटिव खुलती हैं, देन वी माइट बी इन फॉर अ गुड मूव डाउनसाइड टुवर्ड्स 22,000 लेवल। और वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा जो अगर ब्रेक हो जाता है, देन देयर विल बी सम ग्रेट मूवमेंट्स टू द डाउनसाइड। अब हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक भी निफ्टी के साथ जैसे कल मूव किया था, इट विल बी आल्सो अफेक्टेड। 1078 का लो लगाया है, तो वी माइट बी एबल टू होल्ड एचडीएफसी बैंक में, शायद पोजीशन बनाने का टाइम आएगा छोटा सा। एंड इंडस इंड पे कोई इफेक्ट नहीं आया है फिलहाल के लिए, बट इट विल बी अफेक्टेड सून। चेस, गुड फॉर यू ऑन स्टॉक एनालिसिस, you've earned good. Now look for shares that are cheap and invest.
हेलो एवरीवन, सो वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक एंड अगर हम वापस आते हैं मार्केट की तरफ, so फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू थैंक ऑन स्टॉक एनालिसिस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन. थैंक यू फॉर योर फीडबैक आल्सो, विल कीप अप द गुड वर्क. एंड इसके अलावा हम वापस मार्केट पे आते हैं. सो विनय, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द यूरोपियन मार्केट? लेट्स टेक द अपडेट फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट्स. निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आई है, जैसे कि सुबह प्रेड किया गया था, गैप के पास गई थी, गैप फिल हुआ था, एंड नाउ इट्स बैक टू द डाउनवर्ड लेवल. Expecting a move till at least 410 in Nifty and 22,000 in Bank Nifty. Umesh, the European market, almost every single market is down more than 1%. Couple of markets like FTSE, French Euro stocks, and Italian market, they are down um, more than 1.5%, close to 2%. So we clearly can see that Nifty is showing a same movement. I think if this trend continue and if they hold the downtrend, the Nifty might close around 470. And if following back, if the Europe starts US start opening red also in the evening, then tomorrow we'll see another gap down. Like yeah, tomorrow we'll see another gap down. Some I'm hoping another 20 to 30 points down, so around 470 should be the first target from here. But though do not take any sell position at this point, because in the morning we mentioned when it was trading around 460 470, sell with the stop loss of 605 for yesterday's high. तो आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर से जो बैंक निफ्टी है वो भी नीचे की तरफ आ रहा है. और अनीता जी ने जो एक सुबह क्वेश्चन पूछा था, आपका टारगेट जो सीई का था वो हो चुका है, एंड टुडे इज द एक्सपायरी आल्सो, उमेश. So anyway, the Nifty gonna be volatile in the closing period. Like last 2 hours will be very crucial, and we can see the impact on some stocks also of this Nifty. Reliance is about down 1%. Umesh, today TCI Express is down about 2.5%. Okay. Jyoti Lab back to 150 levels. Uh, RACL back to 112 levels. It didn't go through the 117. It didn't hold above that. NCC is back to below 33 levels, 32. So those who haven't at the position, they can add around 30 to 29. Polymedicure is kind of coming down one more or less, like more than 1% down today. So keep those stocks. And ICICI is down 1.5%. Another share, the Siddhant one, Godfrey Philip, didn't hold above 960. It came back 946. SPI is also around 195 today.
तो मार्केट इज करेक्टेड एज पर वी वांटेड इट टू करेक्ट। विनय, अगर हम देखेंगे एचडीएफसी बैंक में कोई मूव नहीं आई है, इट्स स्टिल देयर अच्छा। 1091। एंड आई फील कि अगर एक करेक्शन दोबारा आता है मार्केट में तो द बिगेस्ट लूजर विल बी एचडीएफसी बैंक, जिस हिसाब से इसमें कोई वॉल्यूम नहीं है एंड इट्स जस्ट राइजिंग अबव। सो वी माइट एज वेल सी सम मूवमेंट्स हियर इन एचडीएफसी बैंक। एंड इसके अलावा बैंक यूरोपियन मार्केट्स, जैसे कि मैंने अपडेट दिया है, let them settle for around 15 minutes and then we might see the real thing happening in the markets. Okay. And again, thank you so much, Honest Stock Analysis, for your contribution. बैंक निफ्टी व्यू मेंशन लाइक आपका हमारा स्टिल नेगेटिव है, जैसे अभी भी टारगेट फर्स्ट 22,200 और आफ्टरवर्ड्स 22,000। सेल पोजीशन अभी बीच से नहीं होगी पॉसिबल, पॉसिबल वहीं ऊपर से ही थी जो 700 का लेवल था। तो आपका जो लेवल था, आई मेंशन दैट योर लेवल हैड हिट लाइक द जो आपने 22,300 का सी सेल किया है, so you could have put profit over there, or if you can hold then it would be like it's a, but you need to hold for next week because today we need to see how the US will open after the Europe or in the evening session. And today is the expiry also. So just keep in mind. Hope which expiry did you take actually for your 22,300 C sell? Please mention in the comment box, as well as if anyone else having any question regarding to their position or any stock they are looking into, we can discuss about that one also. मीनवाइल उमेश एनटीपीसी थोड़ा सा वापस ऊपर की तरफ रिट्रैक कर रहा है। 88.35 का इसने लो लगा के वापस 89.10
का लेवल टच किया है वापस. So I think you should book the profit if you are making any, because I'm not sure that again it's gonna hit the 22,300 or not for today.
ओके गाइस, तो एक बार वापस से हम देख रहे हैं यूरोप क्योंकि नेगेटिव है। निफ्टी में थोड़ा सा अपसाइड आया है, बट डू नॉट एंटर इनटू न्यू फ्रेश पोजीशंस ऑफ एनी काइंड, कैन गो फर्दर डाउन। इसके अलावा थैंक यू अगेन ऑन स्टॉक एनालिसिस फॉर योर कंट्रीब्यूशन एंड वी आर नाउ इन द डाउन साइड रेंज। टेक्निकल्स देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। वॉच इज एन इशू, मैकडी इज एन इशू। अगर इसी हिसाब से मैकडी में मूवमेंट रहती है तो वी माइट बी a न्यू लो, बट यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है। till it's down। इंडिविजुअल शेयर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी तो डाउन है, बैंक निफ्टी की ये छोटे एल्स की भी मीटिंग चल रही है, आज मीटिंग है। हैप्पीएस्ट माइंड्स अच्छा आईपीओ निकला है, ओवर 100% प्रीमियम, 125% के आसपास प्रीमियम पे खुला है। एनटीपीसी डाउन है हमारा, क्यूपिड ठीक ठाक है। ज्योति लैब्स में और रेडिको खेतान में दोनों में प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है। ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग इन बोथ ऑफ देम। पीएल इट्स एसबीआई इज डाउन टुडे, सो लुक आउट फॉर एसबीआई। एसबीआई का एक बार हम चार्ट देख लेते हैं, एसबीआई का चार्ट क्या कह रहा है एंड लुक आउट फॉर एसबीआई। रेंज में है अपनी एसबीआई, बाइंग रेंज जो एक सजेस्टेड बाइंग रेंज है 80s 90s के बीच तक की, तो वहाँ पे है एसबीआई। लॉन्ग टर्म आज इस पे योनो की एक हमने बात की थी, डिजिटल स्टार्टअप है एसबीआई का ही। लॉन्ग टर्म शेयर है एसबीआई, कोई होल्ड करके रखना चाहे लंबे टाइम तक तो डेफिनेटली रेट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज इट्स अ गुड बैंक, गुड बैंकिंग शेयर। ओवरऑल कंडीशंस आर आल्सो गुड, इसकी मैनेजमेंट भी अच्छा काम कर रही है डे बाय डे चीज़ें इंप्रूव करने में। अभी 200 पीरियड मूविंग एवरेज के पास है मंथली में ये, यहाँ से सपोर्ट भी ले सकता है, दे रहा है एंड शुड टेक। इट्स अ गुड बैंक, अगर गिरता भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 50 रुपए की भी अगर एवरेज बनाने को मिल रही है तो वो भी बना सकते हैं। ओवर एन ईयर और सो 2 साल 3 साल इसको होल्ड करेंगे, डेफिनेटली डिविडेंड रिटर्न्स आपको देगा, मंथली रिटर्न्स आपको देगा, सो एवरीथिंग विल बी फेवरेबल। बेस्ट पॉसिबल एंट्री अगर अभी एग्रेसिव नहीं है, थोड़ा डिफेंस के साथ लेना चाहते हैं तो 184 का लेवल बताया गया है। बेस्ट डिफेंसिव एंट्री तो वही लेवल देगा एंड दिस इज द 184 178। volume is quite drying up right now। Small positions can be added over time and it will give you good। The best entry for a defensive investor will be around 184 in SBI। Fundamentals are overall good and better than many banks available।
तो मार्केट अगर नीचे आती है, we're expecting a downside in the markets। और अच्छा ऑन स्टॉक एनालिसिस ने अच्छा पैसा कमाया कल सेल करके। अनीता जी, आपको भी कल सेल करना चाहिए था, अच्छा लेवल था वो सेल करने के लिए। बस जो प्रीवियस 1 आवर कैंडल है, अगर इसका लो ब्रेक होता है देन वी माइट बी इन फॉर 11,410 और बैंक निफ्टी में 22,000। So we'll have to wait and see whether the low of today's low is broken or not. That is the important factor that will be played. टेक्निकल्स देख लेते हैं अगर निफ्टी के एक बार तो 3 मिनट्स पे थोड़ा मूवमेंट अपसाइड दिखा रहा है। 3 मिनट्स इज द थिंग ऑफ डेंजर। Breaking of today's lows is important, I think. Guys, any question, any query you might have, हम पूछ सकते हैं आप लोग। और आप भी चेकआउट कर सकते हैं सुपर चैट का फीचर एज द ऑन स्टॉक एनालिसिस डिड। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, वी लाइव है राइट नाउ, यू कैन आस्क अस। वी हैव डिस्कस्ड वेरियस शेयर्स टुडे। आज एसबीआई पे फोकस रहा है थोड़ा। लोअर लेवल्स का वेट कर रहे हैं, अगर डिफेंसिव इन्वेस्टर हैं तो 184 के लेवल्स हैं इसके लिए बेस्ट। 2-3 साल के लिए होल्ड करेंगे, अच्छा डिविडेंड और अच्छा रिटर्न एसबीआई देके जाएगा। द मैनेजमेंट इज डूइंग गुड वर्क इन दीज डेज एंड एवरीथिंग। तो एंड इसके अलावा एक शेयर जो है हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी, फिलिप कार्बन इज गुड शेयर। एक्सेल इंडस्ट्रीज आज हमने सुबह डिस्कस किया था। तो दीज आर गुड फंडामेंटल स्टॉक्स। रेडिको खेतान में आज प्रॉफिट बुकिंग हुई है, उसके बारे में हमने लेवल डिस्कस किया है 480 के अराउंड। अगर अभी तक किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया है, 384 के लेवल से बाय जो किया हुआ है जिसने, तो 480 के लेवल जो नियर अबाउट लेवल है वो इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। पार्शियल प्रॉफिट अगर आपने नहीं किया, अगर ऑलरेडी पार्शियल प्रॉफिट बुक कर चुके हैं, देन यू कैन होल्ड ऑन टू इट। These are the 3-4 shares are जो डिस्कस हुए हैं। मार्केट कंडीशंस आर नेगेटिव, यूरोप इज नेगेटिव, so let's see where it takes. Any question guys, you can post it here. So for any questions, any queries, you can post it in the comment section and we will be more than happy to reply to it. And the shares are discussed today are SBI, Philip Carbon, Excel Industries, Redico Khaitan में profit booking levels क्या रहेंगे। And avoid FSL right now। FSL में सबने profit book कर लिया होगा I hope, so avoid it right now। Don't make fresh entry in FSL। EIH होटल की आज important meeting है, तो जिन्होंने भी EIH होटल होल्ड किया हुआ है, राइट्स इशू निकलने वाले हैं आज, तो लुक आउट फॉर दैट। क्या रेट पे वो निकाल रहे हैं, इट विल बी एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। Okay, waiting for your questions. Any questions you might have about any trades that you have taken or any investment that you have made or want to make in new shares, you can post it here.
ओके सो निफ्टी थोड़ा सा ऊपर गई है, बट इट्स कमिंग बैक डाउन। अब रेड कैंडल एक फॉर्म हो रही है 15 मिनट्स पे, एंड विल हैव टू वेट एंड सी फर्दर कि डाउन साइड पॉसिबल है। सो डोंट टेक मच फ्रेश पोजिशंस इन बाइंग राइट नाउ, दिस इज आवर सजेशन। You can wait to see for the confirmation if it this is confirmed move. We will again like to thank Honest Stock Analysis for his contribution through super chat feature. एंड इसके अलावा अगर हम देखेंगे ज़्यादा, तो नो फर्दर मूवमेंट्स, कुछ ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रही है गाइज। आप कुछ क्वेश्चंस ले सकते हैं हम लोग। क्वेश्चंस आप पुट इन कर दीजिए, कोई भी आपको क्वेश्चन हो, क्वेरी हो कोई किसी शेयर के रिगार्डिंग, क्योंकि अभी निफ्टी में ज़्यादा मूवमेंट आ नहीं रही है, एक्सपेक्टेड मूवमेंट डाउन साइड की ही है। तो फिर कुछ शेयर ज़्यादा मूव कर नहीं रहे। एच डी एफ सी बैंक में आज कुछ मुझे लग रहा है डिफरेंट हो सकता है। अगर निफ्टी में एक और डाउन आया तो एच डी एफ सी बैंक माइट सी अ ग्रेट मूव टू द डाउन साइड, एंड अगर ऊपर गया तो इट विल मूव विद द निफ्टी। तो वेट वॉच आउट फॉर द लोअर लेवल्स इन एच डी एफ सी बैंक। आई टी सी का एक लोअर लेवल 167 है, वॉच आउट फॉर दैट लेवल ऑल्सो। एंड ओके, ऑनेस्ट स्टॉक एनालिसिस। सही पॉइंट पे निकाल दिया आपने, वो भी मेरे हिसाब से जो 490 के आसपास शायद निकाला था। दिस वाज अ गुड पॉइंट क्योंकि इट मेड अ लो ऑफ 11,483। हैप्पीएस्ट माइंड आज आईपीओ लॉन्च हुआ है गाइस। इट हैज बीन सब्सक्राइब्ड 151 टाइम्स। 165 का बैंड प्राइस था, एंड व्हेन इट ओपनड अप एट 350, सो 125% प्रीमियम, 111% to be specified. FSL is out of the portfolio right now. NTPC is making lows. Let's look at NTPC, what it's saying. NTPC में we've added positions, not going up still. Breakout पे था ये। ओके सो दीज आर द लेवल्स। ये जो जोन है एनटीपीसी अपने जोन के बहुत पास में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लो पे ही बाय किया है, वो चढ़ते हुए पे बाय नहीं किया है, गिरते हुए पे बाय कर रहे हैं, so it's a good thing. We might see some movements here and then yeah, it can go on till 80 जैसे कि मेंशन किया गया था। 85, 80, these are all the other levels, और जितना ही डाउन जाएगा उतना इस पे प्रॉफिट रेट बढ़ेगा। तो एवरेजिंग सही पॉइंट्स पे करनी है। द फर्स्ट लेवल फॉर एवरेजिंग विल बी अराउंड 85, बहुत हल्का सा एवरेज करना है, एंड नेक्स्ट एवरेजिंग पॉइंट विल बी 80। फंडामेंटल्स इतने बुरे नहीं है इसके, सब सही है। डिविडेंड भी ये दे देता है, तो डिविडेंड अच्छा खासा देता है बल्कि। तो लास्ट टाइम अगर हम बात करें तो मार्च में इसने डिविडेंड दिया था अराउंड 0.50 पर शेयर, तो ठीक ठाक डिविडेंड भी दे देगा। डिविडेंड यील्ड जो इसकी है वो भी अच्छी खासी है। 2 रुपए का डिविडेंड इसने भी अगस्त में ही दिया है, 13 अगस्त को। उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ा था और वापस उसी लेवल पे अब आ गया है, सो नो इश्यूज अबाउट इट। Levels to add will be 85 and 80s and then hold, and the target will be 99 to 100. So this was about NTPC. तो NTPC में दिक्कत नहीं है। NCC तो होल्ड है ही। अजंता फार्मा इज नॉट डूइंग मच फॉर अस। प्रॉफिट बुकिंग हुई है रेडिको खेतान में बहुत ज़्यादा, 470 से 450 आ गया आज। We'll have to look out for one more share I was thinking about. NTPC के चार्ट पे भी देख लेते हैं टेक्निकल क्या कह रहे हैं। RSI बहुत टाइम से लैग कर रही है 30s की रेंज में, एंड वी माइट सी अ फर्दर डाउन। जो 85 लेवल है वहां पे आ सकता है एनटीपीसी, क्योंकि स्कॉच अभी नेगेटिव हो रखा है।
नहीं, ये तो मैं 15 मिनट देख रहा हूँ. लेट्स लुक एट द डेली. मिस्टेक. या, so far so good. Near its support zone, here is the first support levels. जैसे कि उनसे मार्क किया था, तो 85 का ही पहला लेवल है. ये वहां पे आ गया जो 13 अगस्त को इसने डिविडेंड दिया था ना, तो डिविडेंड देने के बाद ये बहुत चढ़ गया था सीधा 110. और ₹2.5 का डिविडेंड था, छोटा मोटा अमाउंट नहीं था, ₹90 के शेयर के लिए. तो उसके बाद अभी वापस उन्हीं लेवल्स पे आने की कोशिश कर रहा है. यहाँ गैप अप था डिविडेंड देने के बाद. यू कैन सी फॉर योर सेल्फ. ₹3.15 डिविडेंड गिवन ऑन 13th of August एंड देन वेंट ऑन टू 110. तो अभी वापस मैंने लाइंस मार्क कर दी है एनटीपीसी के लिए. दिस इज द जोन फॉर एनटीपीसी टू फर्दर ऐड द पोजीशन. स्मॉल पोजीशन दोबारा ऐड की जा सकती है इस लेवल पे. एंड देन नेक्स्ट लेवल विल बी अराउंड 80. सो एक्सपेक्टेशन है 85 से ही वापस टर्न अराउंड ले लेगा, क्योंकि स्कॉच बहुत देर से इसका नेगेटिव है एंड मैकडी भी पॉजिटिव की तरफ कन्वर्ट हो रहा है. दिस इज अ टेक्निकल एस्पेक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. फंडामेंटली इट्स गुड, नॉट मच इश्यूज विद इट. इसके अलावा गाइस कोई क्वेश्चन हो आपका, यू कैन पुट इट हियर इन द कमेंट सेक्शन. मार्केट इज नॉट मूविंग मच, स्टॉक्स आर नॉट डूइंग मच राइट नाउ, so we can take up a query session of any stock you're looking out for. Put on HDFC chart first. Taking movement from its 200 period moving average. अगर MACD नेगेटिव की तरफ कन्वर्ट होता है, then we might as well see this downside movement in HDFC also. You have to wait and see. क्योंकि स्कॉच पॉजिटिव कन्वर्ट हुआ अर्ली में. 15 मिनट का चार्ट चेकआउट कर लेते हैं.
मीनवाइल आपके क्वेश्चंस भी अब हम ले सकते हैं गाइस, यू कैन पोस्ट ऑन योर क्वेश्चंस. Okay, so RSI's trend line has been broken. See, MACD is still negative. See how it performs. ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे आने की जरूर कोशिश करेगा. For the downside, sir. Let's see. वापस से नेगेटिव हो गई होगी अभी तक. चेक आउट निफ्टी अगेन. या जो ये यूरोपियन मार्केट खुलने के बाद मूवमेंट आई थी 1 बजे तक, एंड इट हैज रिवर्स बैक, वापस अपने लोज के पास आ रही है. तो एज एक्सपेक्टेड माइट सी फर्दर डाउनसाइड. अच्छी खासी कैंडल है रेड वाली. एनगल्फिंग कैंडल है, बियरिशिंग एनगल्फिंग 15 मिनट्स पे इन द रेजिस्टेंस जोन. जो ग्रीन कैंडल बन रही थी आर्ली पे, इट हैज टर्न नेगेटिव, एंड दिस आर्ली कैंडल अगर आज का लो ब्रेक होता है गाइस, देन वी माइट बी इन फॉर 410 लेवल्स. यहाँ पे एक गैप है अगर आप देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रू सपोर्ट है वो ये ग्रीन जोन मार्क किया हुआ है. ये वाला गैप वाली सपोर्ट है ट्रू, शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे. एनी क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन पुट इन एयर.
मार्केट इज लुकिंग नेगेटिव गाइस। आज का लो ब्रेक होगा तो एक डाउनवर्ड मूवमेंट तेजी से मिल सकती है बैंक निफ्टी में 22,000 तक की, और निफ्टी में 400 लेवल ब्रेक हो सकते हैं। तो वी माइट बी इन फॉर दैट मूव। वहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है जरूर 410 का, देखना होगा इट विल होल्ड और नॉट। इफ एनी क्वेश्चंस यू कैन पुट इट हियर। शेयर्स कोई नया हमने नहीं ऐड किया है अभी तक एनटीपीसी के अलावा। आईटीसी 167 पे आएगा तब उसमें पोजीशन ऐड करेंगे। एफएसएल से प्रॉफिट बुक कर लिया है कंप्लीटली। आरएससीएल इज स्टिल अ होल्ड। यूपिड इज होल्डिंग। एफएसएल इज नॉट रिएक्टिंग टू द मार्केट मूव्स एंड ईआईएच होटल की, आज जिसने भी ईआईएच होटल होल्ड कर रखा है, टुडे वी हैव अ राइट्स इशू इन ईआईएच होटल। देखना पड़ेगा किस रुपए पे राइट्स इशू आते हैं। लुक आउट फॉर दैट, विल बी अपडेटिंग यू। के अलावा गाइस कोई क्वेश्चन हो तो आप पुट इन कर सकते हैं अभी भी। मैंने भी पढ़ा लाइव, इस वक्त कुछ शेयर्स के बारे में अच्छा डिस्कशन हो सकता है, सो यू कैन पुट इन सम क्वेश्चंस नाउ। If this candles next candle is going green now in Nifty, 15 मिनट पे नेगेटिव लग रहा है। आईटीसी में 167 से पहले पोजीशन ऐड नहीं करनी है। एनटीपीसी में 85 से पहले ऐड नहीं करनी है। तो एनटीपीसी एंड the other thing, ITC, both are adding, should be adding should be done at lower levels, and with it we have HDFC भी lower levels पे ही ऐड किया जाएगा। फर्दर एडिशन के लिए कोई शेयर नहीं आया हुआ, सब शेयर्स अप हैं पोर्टफोलियो के। ज्योति लैब्स 158 से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई थी ज्योति लैब्स में, तो शायद वहां से लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। ऑल दोज वर होल्डिंग इनटू इट, 138 लेवल से जिन्होंने होल्ड किया है, 162 का एक लेवल है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक कीजिएगा ज्योति लैब्स में। यू कैन वेट फॉर इट। मार्केट में भी अब इसमें अटेंशन आने लगा है ज्योति लैब्स में। यस्टरडे आई हर्ड ऑन मनी कंट्रोल समवन वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो ज्योति लैब्स होल्ड ऑन फॉर 162। AIH important meeting today, so look out for that meeting. Any new share you want to discuss? Yesterday, someone was asking about Coal India, but we had logged out of the session, so I don't remember the name. Dipesh ji, I think he was there. If you are there, just say yes. Excel Industries we discussed in the morning. Good share. Can wait for correction, then add. Yeah, Associated Alcohol will added some positions this week. This week was Associated Alcohol and NTPC. Philip Carbon, we're waiting.
The levels of Nifty was tested yesterday. जब 605 पे निफ्टी गई थी, closed at around 610, 626 तक गई थी. So the ones who took trade at levels earned good profit, including honest stock analysis. So that's the importance of levels. वहाँ पे stop loss कम हो जाते हैं आपके, and you can wait for the positions around them. Guys, all those watching the video, अच्छा लग रहा है तो do press the like button. Don't forget to subscribe and share.
So I was looking for some technical analysis on zeal, and I've drawn this using the zones first. First of all, I marked on the zone, the supply zone for it, and it was coming around till here. यहाँ पे अगर हम देखेंगे बड़ी मूवमेंट जो शुरू हुई थी वो इस लेवल से हुई थी। कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे सपोर्ट लिया था, then it went up and it took again movement from here. So this is was the level of resistance here. So it's around the 250 levels. सर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अभी तक वहाँ पहुँचा नहीं है, लेकिन 250 लेवल है एक, जहाँ पे एक मैंने और चीज़ ड्रॉ की और वो मिली ये ट्रेंड लाइन। आई जॉइंट दीज पॉइंट्स ऑन 4 आवर कैंडल, 2 पॉइंट्स, और एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई है जिस ट्रेंड लो डाउन ट्रेंड है, आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड इन रील, क्लियरली डाउन ट्रेंड, लोअर लोज बन रहे हैं। शॉर्ट टर्म पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड है, ये फ्रॉम 31st March till now, and this downtrend is combined with this शॉर्ट टर्म पे अप ट्रेंड है, तो इट विल हैव टू ब्रेक फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये जो लेवल है ना 250 का जील के लिए, इट इज वन लेवल दैट मेनी सेलर्स विल कम अप टू 250 पे। So if anyone wants to do it positional, then wait for these levels of around 250, क्योंकि एक भारी रेजिस्टेंस है झील में। यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है तो यहीं पे जाएगी, बाकी अगर शॉर्ट टर्म देखे तो शायद वापस डाउन आ सकती है, कि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, तो ब्रेकआउट का वेट किया जाएगा इसमें, एंड देन 250 लेवल का बाय करने के लिए ब्रेकआउट इज अराउंड फ्रॉम हेयर 228, आफ्टर दैट 250। तो ये वाला लेवल था, यहाँ से ब्रेकआउट मिला था, वापस यहाँ पे आया था, नाउ अगेन इट्स गोइंग अप बॉटम। ब्रेकआउट के लिए अपर डार्क लाइन इसको कवर करनी पड़ेगी, और अगर नीचे आएगा तो ये लोअर वाली लाइन तोड़नी पड़ेगी। सो बोथ ऑफ द कंडीशंस आर देयर फॉर इट। किस साइड ये जाता है, दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स। दिस इज द एनालिसिस फॉर zeal। So suggested a buy around 149 levels, and now it's 221. Profit was booked at 178, 180. Look at market again. Consolidating at lower levels. Technicals.
Hello, Sabin Thomas. You're asking a question about Zen Tech. Okay, let's look at the technical first. For asking for the long term. Okay, hope it's falling and the position can be added. Okay, falling dividend देता है. Okay, it has given a dividend recently. 10 सितंबर को डिविडेंड आया था एंड उससे पहले मार्च में डिविडेंड आया था कंटिन्यू प्राइस डिविडेंड. ओके एंड पर मंथ वीकली just made a boring candle, just taken a good move. 200 period moving average से सपोर्ट ले रहा है. मार्च में बहुत डाउन 23 रुपए आया था ये. ओके इन मई मार्च में 23 रुपए आ गया और 80 रुपए वापस. इट्स ऑल टाइम हाई इज अराउंड 153. लेट्स चेक आउट द फंडामेंटल्स फॉर दिस. इट विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग कि एग्जैक्टली है क्या है, कंपनी करती क्या है. Zen Technologies. So is engaged in the design, development, and manufacture of training simulators. The product of the company are advanced weapon simulator, arms, small arms training simulator, hand grenade simulator. Okay, defense से related काम है इनका. Security forces, government, civilian market, operations training. Okay, so fundamentally जो इसकी industry basically defense sector से related है and arms and ammunitions वगैरह simulators industry. Okay, so let's aerospace and defense basically. Let's check out for its ratios. Beta is high, price to book value is high. Its market capital is 6.37 billion and its ratios. डेट बहुत कम है, डेट नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है. कैश फ्लो अच्छा है, 572 मिलियंस. ओके, अच्छा खासा कैश फ्लो भी मेंटेन कर रखा है इन्होंने. करंट प्राइस इज अराउंड 80. एसेट्स देखते हैं इनके इनके एसेट्स की वैल्यू क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होने वाला है वो. एंड हाउ इट्स परफॉर्मिंग ओवर टाइम. ओके सो लेट्स check out the fundamentals for this. The book value is around 1421 rupees के आसपास इसकी book value. So asset value is quite low. That's why it's selling at 3 times its assets value. कैश फ्लो इनके पास मेंटेन्ड है. फ्री कैश फ्लो अच्छा खासा है. रेवेन्यू इनके पास कम आया है पिछले 3-4 साल से. ओके, रेवेन्यू कम आया है, ऑपरेटिंग इनकम कम है, नेट. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो काफ़ी अच्छा है, 23 इज अ गुड अमाउंट. टर्न ऑन एसेट, एसेट्स पे अच्छा रिटर्न अभी शुरू हुआ है. इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल फैक्टर इसको इफेक्ट करने वाला है सबिन थॉमस, दैट विल बी द डिफेंस सेक्टर में जो प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है एंड अलाउंसेस की बात चल रही है. जैसे कि आपने देखा था अशोक लीलैंड काइंड ऑफ शेयर दे जस्ट जंप्ड व्हेन द न्यूज़ केम आउट. तो फिलहाल इसका भी करंट ओके. सो इसके पास एसेट्स के साथ जो इसका करंट रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. क्विक रेशियो भी अच्छा खासा है. ओके, फाइनेंशियल लेवरेज इसका ठीक है, डेट बिल्कुल नहीं है इस कंपनी पे. ग्रोथ स्टॉक है, इतना तो क्लियर है, इट्स ग्रोथ स्टॉक, इट्स नॉट अ वैल्यू काइंड ऑफ अ स्टॉक. डिविडेंड ये क्योंकि बहुत कम दे रहा है पिछले 4 साल से देना शुरू किया है. बट लेट्स होप इट विल पे अ डिविडेंड, हेल्दी डिविडेंड. अर्निंग पर शेयर इसका अराउंड 7 रुपए. अर्निंग पर शेयर अभी ही बढ़ा है, उससे पहले इतना खास कुछ नहीं था 10 साल में अगर हम देखें तो. अर्निंग पर शेयर इतना कुछ खास नहीं है इसका.
नेट इनकम भी, नेट इनकम लेकिन तो बहुत ज्यादा इंक्रीज, ओके। सो इट कैन बी वन ऑफ द ग्रोथ स्टॉक सविन थॉमस, एंड इन्वेस्टमेंट कैन बी मेड बिकॉज इसके बिल्कुल जो रेशियोज हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मतलब ऐसा कोई इस पे एसेट कोई लाइबिलिटी नहीं है जो इसमें दिक्कत दे रही है। इस पे फर्दर डीप एनालिसिस सो एज टू लुक इनटू डीप इनटू द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट एंड द कैश फ्लोज, वो इसके थ्रू हम करेंगे। आई ऑल्सो लाइक दिस शेयर, गुड ग्रोथ शेयर, एंड विल हैव टू चेक आउट फर्दर इसका। और इन्वेंट्री, ओके, डेज इन्वेंट्री भी घट रहे हैं, इन्वेंट्री की बहुत जल्दी बिक रही है। पेबल टाइम इनका कितना है, पेबल टाइम एंड रिसीवेबल टाइम, रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, ठीक है, थोड़ा डिफरेंट, ठीक है। इट्स अ कंप्लीट ग्रोथ स्टॉक, ओवरऑल इट्स लुकिंग गुड। नो, फर इसमें कुछ इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, बट इसका अप्रोप्रिएट लेवल जो होंगे बाय करने के, एक बार वो हम देख सकते हैं, क्योंकि इतना जल्दी ज्यादा रिटर्न भी नहीं देगा। इट्स जस्ट द हाइप, दैट इज व्हाई इट्स ग्रोइंग सो मच, क्योंकि 23 इसकी एसेट वैल्यू है। इतना खास अभी इसने प्रॉफिट, रेगुलर प्रॉफिट देने शुरू किए हैं, लेकिन हाँ, ये बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है जिस हिसाब से इसने मूवमेंट्स लिए हैं। तो वी कैन लुक आउट फॉर इट्स लेवल टू बाय। ओके, फर्स्ट और 74 के आसपास इसका एक अच्छा, 74 से लेके यहाँ का हम जो 61 का लेवल देख रहे हैं, तो वन द फर्स्ट पोजीशन इसमें जो बनाई जा सकती है, और इतना करेक्ट हो जाएगा, इतना कोई इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। Sabin Thomas, I hope you're listening to us right now, because this analysis we are doing it for you. अगर ये वाला वीकली जो है मेंटेन हो जाता है, देन द फर्स्ट बाइंग लेवल विल बी अराउंड 70 लेवल, 70 के आसपास का लेवल का वेट कर सकते हैं एंट्री के लिए। और नेक्स्ट लेवल जो होगा एंट्री के लिए वो ये वाला होगा, 50। दीज आर द टू एंट्री लेवल्स, 50 एंड 70, इन दो लेवल्स पे एंट्री ली जा सकती है शॉर्ट टर्म के लिए। एंड लॉन्ग टर्म इसका प्रोस्पेक्ट्स इतने कुछ बुरे नहीं है, डेट इतना कुछ खास नहीं है, तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स डू लुक गुड, बट इट्स जस्ट द हाइप, दैट इज व्हाई इट इज ग्रोइंग so much. So you can wait for the further consolidation since you are thinking of long term, आप long term का सोच रहे हैं, so you can wait further to add the positions at around these levels 60 and 50. So I hope, Sabin Thomas, you were listening to this. Uh, if yes, then you can mention it. Levels, I've suggested you the levels for it for long-term entry in there in this share, क्योंकि हाइप की वजह से ज्यादा बढ़ा हुआ है, ना कि और कोई वजह है। ओवरऑल ग्रोथ स्टॉक की कैटेगरी में मैं इसको पुट करूंगा, क्योंकि अभी इतने कोई वैल्यू नहीं दिखाई है ओवर द लॉन्ग टर्म। बट यू कैन अपना एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेने के लिए, यू कैन वेट फॉर दीज लेवल्स ऑफ 60, 50। जितना करीब लो के अपने इनके एसेट वैल्यू के लेंगे उतना बेटर, पर हाई वॉल्यूम है तो 60 लेवल वुड बी, 60 एंड 70 लेवल वुड वर्क आउट इन द शॉर्टर टर्म, आई थिंक दैट वुड बी द परफेक्ट एंट्री। तो दिस इज Zentek, एंड हम भी इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ इसको 65 के लेवल के आसपास, अभी करंट पोजीशन पे नहीं ऐड करना चाहेंगे हम इसे। एट लोअर लेवल्स वी विल बी लुकिंग टू ऐड इट, सो आई विल मेंशन इट हियर। इसके अलावा guys, anyone is interested in asking any question, like we have done the analysis for honest this Sabin Thomas, we can discuss your share also. Zentek, it's a good portfolio stock. Sabin Thomas, you really take out good stocks, but the levels we have provided it, adhere to these levels ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। इन लेवल्स का वेट जरूर करना इंपॉर्टेंट है, करंट लेवल पे नहीं, थोड़ा और करेक्शन की उम्मीद है, सो दैट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हम यूज कर सकें अपनी। लॉन्ग टर्म व्यूज ऑन दिस इज गुड, अगर इसको एक दे 2 साल के लिए भी अगर होल्ड कर सकते हैं, 2-3 साल के लिए, इट विल गिव यू अराउंड 200% रिटर्न ऑल्सो। लॉन्ग टर्म शेयर है क्योंकि ये
No, Sabin Thomas, unfortunately not. We have not been able to look at these shares. Uh, I think over the weekend we will do it. We'll do it over the weekend and then we'll let you know. Yeah, exactly. Like you said, stock market is not going anywhere. Patience is important. आज कुछ ज़्यादा मार्केट में हो नहीं रहा है एंड guys, further, all of you listening, don't forget to share the channel amongst your friend circle, among your family, and it will be great if we have new subscribers to the channel so that we can discuss new things with them. There will be more discussion on many shares. Don't forget to like as well. If anyone is having any questions, you can ask us right now. Otherwise, we'll be looking to end the session today. Important work. Nifty is correcting, and we hope that last घंटे में भी correct होगी Nifty, and we might see lower levels. Europe is negative. Any questions you may ask in next 5-10 minutes, and then we'll be leaving for today.
अनीता जी, आपका क्वेश्चन है, ये सेल बैंक निफ्टी 21,500 CE 24 सितंबर @1032. 1 second, we'll check it out.
RBI policy is something that will decide the momentum, I think. So anyway, both of the sides are still open. It's not going below 22,000. It's not going above 22,740. So both this is the range where it is following right now. और currently ये कहीं पे भी नहीं है. सुबह 300 का जो लो लगाया था वहीं पे वापस है. हो सकता है पॉलिसी आने के बाद डाउन खुले, जैसे कि आज गैप डाउन हुआ था, कल भी एक गैप डाउन मिल जाए, या फिर हो सकता है कल गैप अप हो जाए. तो इट्स क्वाइट वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ द पॉलिसी थिंग्स. ऑलमोस्ट 217, एक घंटा ही बचा है. तो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द पॉलिसी. और बिल्कुल सेंटर में है इसका डायरेक्शन. 700 एंड बिटवीन 22,000. एग्जैक्टली 350 के आसपास चल रही है. You have to, I think, wait. You should wait. कल अगर सेल किया होता कितना सही ट्रेड बना होता. भी वेट करते हैं. के अलावा कोई क्वेश्चन हो गाइस आपका, यू कैन पुट इट हेयर. एंड we'll be looking to end the session after this. Meet up tomorrow. Meanwhile, don't forget to share the channel amongst your friend circle. Don't forget to share, subscribe, and like.